Good evening, you're watching Hornbill TV's Prime Time. First, the headlines. 4 people have died and scores are feared trapped under the debris after a cloudburst struck Uttarakhnd's Uttarkashi district this afternoon, triggering a mudslide and a flash floods that swept through a village, catching its residents by surprise. Rajya Sabha on Tuesday adopted a statutory resolution to extend President's rule in Manipur for 6 more months. Scientists have claimed that the archaeological findings from Gujarat's Kanch reveals evidence of human presence dating back 9,000 to 9,500 years. Former Jammu and Kashmir Governor Satya Malik had died on Tuesday at the age of 79 after a prolonged illness. Now the news in details. A cloudburst in Darali, Uttarkashi has led to flash floods causing significant destruction and fatalities. At least 4 individuals have lost their lives, with multiple houses damaged or swept away by the floods. The flash floods have triggered panic in nearby villages, with videos showing torrents of muddy water rushing down slopes and residents screaming in fear. The cloudburst occurred in the Gir Ganga River's catchment area. Darali, a stopover en route to Gangotri, hosts numerous hotels and homestays, many of which may have been destroyed. Relief operations are being carried out by various agencies, including the State Disaster Response Force and the National Disaster Response Force. An army team from Himachal has been deployed to assist with the rescues. Local reports indicate that 10 to 12 people might still be trapped under the debris and that around 20 to 25 hotels and homestays may have been washed away. Uttarkashi District Magistrate Prashant Arya confirmed that fatalities and ongoing rescue efforts. अभी वहाँ पे नुकसान हुआ सर, क्या एग्जैक्ट अभी वहाँ पे डाटा आपके पास कुछ अवेलेबल? जी अभी एग्जैक्ट डेटा तो नहीं मिला है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जरूर है कि धराली में खीर गंगा है गदेरा, जिसमें ऊपर जैसा वीडियो में भी हम देख पा रहे हैं कि क्लाउड बस्ट होने से काफी पानी एक साथ आया है, एकदम से आया है। और चूंकि वहाँ पे गेस्ट हाउस है और छोटे रेस्टोरेंट भी है और होटल्स भी हैं, तो उसी के मद्देनजर हमने अपना आर्मी का टीम हरसेल की है, उनको मैंने रिक्वेस्ट करके तुरंत भिजवा दिया था। और उनका भी एक अभी वही फोन पे अभी नेटवर्क पे मेरे कनेक्शन थोड़ा वीक हो रहा है, वहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ एक लॉसेस की सूचना है। तो 4 लोगों का उन्होंने मुझे बताया था कि लॉस का आया है और प्रॉपर्टी का लॉसेस भी है। हम लोग मौके पे निकल रहे हैं और मौके पे ज्यादा अच्छा उसका सर किसी प्रकार की मानहानि का कुछ जी जनहानि का 4 का उन्होंने बताया। कोई होटल्स कोई मकान? वो तो अभी तुरंत ही घटना घटी है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है सेटल करने में। कि जैसे हमारी टीम तहसील का टीम चली गई है, पीडब्ल्यूडी का टीम चली गई है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ को मैं भेज चुका हूँ। तो एक इवेल्युएशन में टाइम लगता है थोड़ा सा, 1 घंटे के बीच में बाद के आसपास हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। BJP Meghalaya State President Rikam J. Momin expanded the state team by nominating 52 state executive members along with 12 special invitees and 4 permanent invitees. This expansion comes just before the convening of the state's executive meeting slated to take place in Shillong this month. This exercise is a part of the organizational expansion process that BJP Meghalaya has adopted to prepare for future elections. Meanwhile, on June 14, with a focus on Meghalaya state election scheduled for 2028, the state unit of the party announced a new team of the office bearers after approval by the BJP National President JP Nadda. The new team had been entrusted with strengthening the party at the grassroots level, spreading the Prime Minister's message of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas. As approved by the Union Minister JP Nadda, the following are appointed as the state office bearers of Bharatiya Janata Party Meghalaya Pradesh for the session of 2025 and 2028. Kwar Bokhal and Balsayamot
Shillong, Bernat and Marak, Jura City, Lakong, Biam, West Janita Hills, Dr. Bernadette Lingdoi, Shillong, ER Bipen Pradhan and Anil Hajong, and has been appointed as a state vice president. Scientists have claimed that the archaeological findings from Gujarat's Kanch reveal evidence of human presence dating back 9,000 to 9,500 years. The finding is a collaborative work IIT Gandhinagar, IIT Kanpur and the Inter-University Accelerator Center Delhi and the PRL Ahmedabad. VN Prabhakar, Associate Professor, Department of Earth Science, IIT Gandhinagar, said one of his colleagues found many broken shells in Pambanka, 10 kilometers away from Dholavira. It was found to be about 6,000 years old. When he joined the IIT in 2020, he identified that those were shells middens, where shells broken by humans are collected in a single place. They also found stone stools. कच्छ इलाका जो है हम लोग हड़प्पन सभ्यता के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ कई सारे हड़प्पन सभ्यता का साइट्स भी हैं, हम लोगों को पता है। और धोलावीरा जो है सबसे बड़ा साइट है उधर, वो रिसेंटली वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी में भी इंस्क्राइब हुआ है। लेकिन 2020 से हम लोग यहाँ नए तरीके से रिसर्च कर रहे हैं। हमारा एक कोलीग हैं प्रोफेसर विक्रांत जैन, उन्होंने एक जगह है बामन का करके, धोलावीरा से 10 किलोमीटर दूर है। वहां उनको कई सारे शेल्स, ब्रोकन शेल्स वगैरह मिला है। उन्होंने उसको डेट भी करने के लिए कोशिश किया, डेट किया तो वो करीब 6000 साल पहले का पाया गया। फिर जब मैं यहाँ आईआईटी में 2020 में ज्वाइन किया तो उन्होंने मेरे को दिखाया ऐसे ऐसे हम लोगों को मिल रहा है, तो तुरंत मैंने पहचाना कि ये शेल मिडन्स हैं। एक पुराने जमाने में क्या है, लोग हंटर गैदरर स्टेज में थे, मतलब एग्रीकल्चरलिस्ट नहीं थे, वो कुछ उगाते नहीं थे, तो जो वातावरण में जो मिल रहा है वही खा के वो जीवित रहते थे। तो उन्होंने इस शेल्स को उन्होंने कलेक्ट किया है, उसको तोड़ा है बीच में से, फिर उसका मांस जो है कंज्यूम करके फिर बाकी डिस्कार्डेड शेल को फेंक दिया। तो ऐसे फेंकने में कई सारे शंख जो फेंकने में एक जगह में इकट्ठा हो गया, उसको हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट शेल मिडन्स बोलते हैं या शेल स्कैटर भी बोलते हैं, कि जहां एक जगह में मानव के द्वारा तोड़ा गया शेल्स को एक जगह में एकत्रित मिलता है तो उसको हम शेल मिडन्स या शेल स्कैटर्स बोलते हैं। तो इसके साथ साथ क्या है, हम लोगों को कुछ स्टोन टूल्स भी मिले हैं कुछ जगह, जैसे बामन का है, जनान है, लोंगवाली है। 3-4 इलाके में से हम लोगों को टूटे हुए पत्थर के औजार भी मिले हैं जो उन्होंने इस्तेमाल किया होगा पुराना जमाने में कई सारे औजार बनाने के लिए। उसको कॉम्पोजिट टूल्स बोलते हैं हम लोग। इसको ये एक ही साथ लकड़ी में फंसा के नाइफ भी बना सकते हैं, सिकल भी बना सकते हैं, तो उसको और यूज किए होंगे। तो धीरे धीरे हम लोगों को एक जगह में जो मालूम हुआ बामन का में, तो गांव वाले से पूछा हम लोगों ने कि ऐसे मिलता है क्या धोलावीरा में और आसपास में या पूरा खड़ीर में। तो उन लोगों ने लोकल कई सारे इलाके में हम लोग को लेके गए। अमरापर है, जनान है, और खड़ीर में कुछ इलाके है, जंडियासर नदी के आसपास। तो कई इलाके में जो धीरे धीरे हमने देखा, कम से कम 15-16 जगह खड़ीर द्वीप में हम लोगों को ये शेल मिडन का एविडेंस मिला। उसके अलावा बगल में बेला आइलैंड है, वहां 3-4 इलाके में हम लोगों को मिला। फिर कच्छ मेनलैंड है, वागड़ में भी हम लोगों को 3-4 इलाके में हम लोगों को मिला है। इनमें से हम लोग 10 सैंपल करीब डेट किया। दिल्ली में इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर है, जहां डॉक्टर पंकज हमारा कोलैबोरेटर है, उनके थ्रू हमने डेट किया। तो हम लोगों को नई तरीके से डेट्स आए हैं 7,500 BC से शुरू करके 4000 BC तक। इतना एक बड़ा सा एक टाइम ब्रैकेट में लोग वहां हंटर गैदरर स्टेज में रहते थे, सभ्यता के बहुत पहले, हड़प्पन आने से पहले। लेकिन ये लोग लोकल वातावरण पूरा समझते थे, और ये जो शेल स्पीशीज है वो मैंग्रोव एनवायरनमेंट में ही पलता था, इसलिए उस जमाने में मैंग्रोव फॉरेस्ट बहुत सारे वहां रहते होंगे। इन लोगों ने एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक भी इन लोगों का कॉन्टेक्ट रहा होगा। और
धीरे धीरे ये जो नॉलेज है, ज्योग्राफिकल नॉलेज है, वो हड़प्पन्स के पास थ्रू किया होगा। हड़प्पन्स को हम लोग जानते हैं कि ये लोग मैरीटाइम ट्रेड में बहुत माहिर थे, मेसोपोटामिया तक जाते थे। तो ये सारे नॉलेज जो हैं ये हंटर गैदरर स्टेज से शुरू करके धीरे धीरे जो है सभ्यता जब बढ़ने लगा तब जाके वो एक बड़ा एक स्वरूप लिया है और अल्टीमेटली हड़प्पन्स मैरीटाइम ट्रेड में माहिर हुए हैं। इस रिसर्च जो है एक प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, उसके द्वारा एक स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है। इसमें आईआईटी कानपुर और आईआईटी गांधीनगर का कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है। आईआईटी कानपुर की तरफ से प्रोफेसर जावेद मलिक और देवज्योति पॉल है और यहाँ आईआईटी गांधीनगर की तरफ से मैं इसको लीड कर रहा हूँ। इसके अलावा साइंटिस्ट इन्वॉल्व हुए हैं इसमें, आईयूएससी के पंकज कुमार और एनजीआरआई से डॉक्टर शकील अहमद और डॉक्टर सौरव कुमार। सो ये बहुत बड़ा एक टीम है। जियोलॉजिस्ट हैं वो लोग और हम आर्कियोलॉजिस्ट है। जियोलॉजिस्ट पूरा 1 लाख साल तक कैसे वातावरण रहा होगा। रन जो है आज एकदम साल्ट मार्शी वेस्टलैंड है, लेकिन पुराने जमाने में कैसे रहा होगा, सी लेवल राइस रहा होगा। इंडस नदी जो है हो सकता है डायरेक्टली वहां ड्रेन होता होगा सरस्वती के साथ। सो ये सब वातावरण का अध्ययन वो करेंगे। हम लोग जो है आर्कियोलॉजिस्ट जो है मानव जो वहां का रहते थे उनका अध्ययन हम कर रहे हैं। तो इसका परिणाम ये है कि हम लोगों को बहुत अच्छा एविडेंस मिला है। हम आगे भी इस रिसर्च को दूसरे आइलैंड्स और कच्छ मेनलैंड में बढ़ाने वाले हैं। सर मान सकते किससे कि हड़प्पा Rajya Sabha on Tuesday adopted a statutory resolution to extend President's rule in Manipur for 6 more months. Union Minister of the State for Home Affairs Nityanand Rai moved the resolution in the upper house today amid heavy sloganeering by the opposition. The house adopted a statutory resolution continuance in the force of the proclamation dated the 13th February 2025 in respect of Manipur, issued under the Article 356 of the Constitution by the President for a further period of 6 months with effect from 13th August 2025. Earlier on July 30, the Lok Sabha passed a resolution to extend President's rule in Manipur. The President's rule was imposed in Manipur on February 13 days after N. Biren Singh resigned from the Chief Minister's position. Singh resigned amid violence and political instability that had plagued the state for nearly 2 years. The decision exercised under the Article 356 of the Constitution means that the President will now directly control the state's administrative functions through the governor. सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहूंगा कि एक हाई कोर्ट के फैसले के कारण मणिपुर में 2 समुदायों के बीच आरक्षण संबंधी विवाद के कारण जातीय हिंसा भड़क उठी है। और जो लोग कहते हैं कि वह धार्मिक हिंसा है वो बिल्कुल ही गलत बोल रहे हैं और एक साजिश के सिर्फ 1 हफ्ते हुई है महोदय, राष्ट्रपति शासन लागू हुए 8 महीने हुए हैं। 8 महीने में हिंसा में इधर के 4 महीनों में एक भी मौत नहीं हुई है। जब मणिपुर में हिंसा भड़की थी उसके बाद माननीय गृह मंत्री जी ने मणिपुर राज्य के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा हुआ। दौरा के दौरान उन्होंने उच्च अधिकारी, सुरक्षा बलों और सामाजिक संगठनों के साथ 100 से अधिक सदस्यों के साथ उन्होंने मीटिंग की। आज वहाँ शांति व्यवस्था है। वहाँ माननीय महोदय प्रधानमंत्री जी के विकास दृष्टिकोण के कारण वहाँ नॉर्थ ईस्ट में इतना विकास हुआ है। महोदय मैं अनुरोध करता हूँ कि मणिपुर राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 13 फरवरी 2025 को जारी की गई घोषणा को इस सदन द्वारा
अनुमोदित करने की कृपा करें। मैं नोट कर रहा हूँ, संविधान के साथ निर्धारित घोषणा के पट्टे परिणामी आदेश के साथ सदन के पटल पर रख दी गई है। The question is put. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. You have to go back to your seats. Then you can say only no. मैं आपको पूरा मौका देता हूं कि आप अपनी सीट पर जाइए। नो कहने का आपको अधिकार है, डिस्पोज करने का अधिकार है, वेल से नहीं है। I'll read. Please go back to your seats. वेल से आप किसी तरह के अधिकार की मांग नहीं कर सकते। Please go back to your seats. Those in favor will please say aye. Those against will say no. I think the ayes have it. The statutory resolution is adopted. A quick break. We'll be right back. You can get HIV through transfusion of HIV-infected blood. Take blood only from licensed blood banks. Welcome back. India and the Philippines signed the Exchange 14 Memoranda of Understanding on Tuesday, looking to increase cooperation across sectors, including sharing the terms of reference of the negotiations for the Preferential Trade Agreement (PTA). The multiple MOUs were exchanged in the presence of the Prime Minister Narendra Modi and the Philippines President Ferdinand R. Marcos Jr. today, boosting ties between both nations and enhancing their trade relations. Notably, this is President Marcos' first state visit, with both countries celebrating 75 years of strong diplomatic relations. The MOUs include cooperation in digital technology, space science and tourism, and also increased cooperation between the armed forces and the Coast Guard. External Affairs Secretary E.S.P. Kumaran said in MEE media briefing in the national capital, there was adoption of terms of reference for the negotiations on the preferential trade agreement between India and the Philippines. Thank you, Randhir. Good afternoon, friends from media. I extend all of you a warm welcome and thank you for joining us today for this special briefing on the state visit of the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. to India. The visit commenced yesterday and will go on till 8th of August 2025. This is the first visit of President Marcos to India in his official capacity. The visit is significant as it comes as we mark the 75th anniversary of the establishment of diplomatic relations with the Philippines in 1949. During this visit, both Prime Minister Modi and President Marcos have agreed to elevate the India-Philippines bilateral cooperation to the level of strategic partnership, aimed at furthering our engagements across a vast number of sectors, including political cooperation, defense, security and maritime cooperation, trade and investment cooperation, healthcare and pharma, cooperation in science and technology, space, connectivity, digital economy, fintech, consular matters, culture, tourism, people-to-people exchanges, and closer cooperation on regional, multilateral, and international issues of mutual interest. We have also adopted a plan of action for the period 2025 to 29 to guide our cooperation under the elevated strategic partnership. President Marcos is accompanied by the First Lady,
Luis Araneta Marcos, and a high-powered delegation comprising 14 ministers, senior officials, and a large business delegation. On his arrival in Delhi, he was accorded a ceremonial reception at Rashtrapati Bhavan this morning. This was followed by a visit to Rajghat, where the President paid respects to Mahatma Gandhi. President Marcos then held wide-ranging and productive bilateral talks with the Prime Minister, initially in the restricted format and then in the full delegation format. The Prime Minister also hosted a lunch for him. President Marcos will be meeting Rashtrapati Ji during this visit later today. The Honorable Rashtrapati Ji will also be hosting a banquet in honor of President Marcos. The External Affairs Minister, Dr. S. Jaishankar, also called on President Marcos yesterday. Former Jammu and Kashmir Governor Satya Malik died on Tuesday at the age of 79 after a prolonged illness. He died at approximately 1 p.m. today at Ram Manohar Lohai Hospital in New Delhi, where he was receiving medical treatment. Malik served as the last governor of the erstwhile state of the Jammu and Kashmir from August 2018 to October 2019. It was during his tenure that the Article 370 was abrogated and the special status of the state was revoked on 5th August 2019. Today marks the 6th anniversary of the decision. He was later appointed Governor of Goa and subsequently served as the Governor of Meghalaya until October 2022. Malik's political career began as a socialist face in the 1970s. He became a member of the Uttar Pradesh Legislative Assembly in the 1974, representing but on a Bharatiya Kranti Dal ticket. He later served as the General Secretary of the Lok Dal and went on to become an MP from Uttar Pradesh in Rajya Sabha in the 1980 to 1989. His career saw him move through different political affiliations, including the Congress and the Janata Dal, before eventually joining the BJP in 2004. Widespread monsoon-related disruptions continue to affect Himachal Pradesh, with the State Disaster Management Authority reporting that 449 roads, 753 distribution transformers and 276 water supply schemes were impacted across the state as of the 10 a.m. on Tuesday. The SDMA confirmed that the total death toll has reached to 192 since the onset of the monsoon season. This includes 106 rain-related fatalities and 86 deaths in the road accidents, underscoring the dual threat of the natural hazards and the infrastructural vulnerability during the current weather conditions. Mandi remains the worst affected districts, with 318 roads blocked due to the heavy rainfall and landslides, including 3 key national highways. Other severely impacted districts include Kulu with 67 roads blocked, Kangra with 23 and Sirmaur with 22. The SDMA continues to issue alerts and it has advised citizens to avoid unnecessary travel, especially in vulnerable zones. 2 women were killed and several others were injured in the stampede-like rush at Kubereshwar Dam in Madhya Pradesh, Sehor on Tuesday. As per the information, the incident occurred due to the massive crowd gathering ahead of the Kwar Yatra, which was expected to be led by the devotional storyteller Pandit Pradip Mishra on August 6. It was announced that the Kavat Yatra will take place in Kubereshwar Dam on August 6. Before this, a large crowd of devotees had already arrived in Kubereshwar Dam. The injured individuals were transferred to a hospital for appropriate medical care. Chief Minister Mohan Yadav said that he have received the information and asked the officials to take note of it. It is a tragic incident. Arrangements will be made to ensure such incidents do not happen in the future. मुझे जानकारी आई है, मैंने इस बात को अधिकारियों को कहा है देखने के लिए, और संभवतः ये बहुत दुखद हादसा हुआ जो 2 व्यक्तियों की जानकारी आई है। हम उम्मीद करेंगे कि ये वहाँ के अपने आयोजक
मिश्रा जी और प्रशासन के साथ मिला करके कि भविष्य में इस प्रकार की घटना न हो, इस प्रबंधन करेंगे। That's all for now. Keep watching Hornbill TV. Copy that. Yes, I'm in his makeup room. Yes, I'll get the dialogues done. Okay. और लंच किया? बस सोडा। बस सोडा? क्या यार, मुझे लगा एडी से बड़े डायरेक्टर बनोगे, देश का नाम रोशन करोगे। अरे नहीं सर, क्या हो गया? करूंगा ना देश का नाम रोशन। नो पोर्शन नो रोशन मिस्टर असिस्टेंट डायरेक्टर। रियली? इसीलिए लिसन टू योर बॉडी। सुनो सुनो सुना, क्या कह रहा है शरीर? क्या कह रहा है सर? कह रहा है कि मुझे विटामिन्स दो, प्रोटीन दो, कार्बोहाइड्रेट्स दो, मुझे सही न्यूट्रिशन दो, और तुम दे रहे हो सोडा। पर सर रात को तो मैं रोटी खाता ही हूँ। अच्छा, तुम्हें एक्शन फिल्म्स पसंद है? हाँ, आई लव एक्शन फिल्म्स। अब मान लो मैं तुमसे ये कहूं कि आज के बाद तुम सिर्फ और सिर्फ एक्शन फिल्म्स देखोगे, चलेगा? अरे नहीं सर, रोज एक्शन फिल्म्स देखूंगा तो दिमाग खराब हो जाएगा ना एक टाइम के बाद। हाँ एग्जैक्टली, ठीक उसी तरह एक जैसा खाना खाने से हेल्थ नहीं बनती दोस्त। जो न्यूट्रिशन रोटी में है वो चावल में नहीं, जो चावल में है वो रोटी में नहीं। परवल के अलग गुण, भिंडी के अलग। अब बताओ क्या करें? क्या करें सर? डाइट मिलाओ, वर्सेटैलिटी, सब कुछ घुमा फिरा के, ताकि शरीर को मिले भरपूर पोषण, एकदम बैलेंस्ड डाइट। ओके सर। और सिर्फ खुद का ही नहीं, अपनी पूरी फैमिली में सबके न्यूट्रिशन का ख्याल तुम्हें भी रखना है। मुझे भी? हाँ क्यों नहीं, तुम परिवार का हिस्सा नहीं हो? राइट सर। गुड, चलो लाइंस करते हैं। नहीं सर, पहले मैं लंच करके आता हूँ। ये हुई ना बात। जाओ। अब ये तो समझ गए, आप भी समझ ही गए होंगे कि सेहत के लिए सही पोषण के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। सही खाएं, सही जिएं, क्योंकि सही पोषण देश रोशन। Ready? 3, 2, 1, you.